standard languaging page where you have to type npx create React app. Nobody does this right now. Like nobody actually does this create React app thing. What they do is right now use a bundler. Okay, is Vite a bundler? Yeah, it is a bundler. So Vite already so there is some already producing React का कोड पहले से पड़े हुआ, ठीक है. तो what Vite does is कि वो पड़े हुआ कोड लेके उठा के हमारे कंप्यूटर पे डाउनलोड कर देता हूँ. So that is what Vite does for you. React app also does the same thing, but Vite is kind of faster and it's kind of nicer. So that is why people use it Vite right nowadays. So let us go and type Vite or White, whatever you want to call it. And yeah, the next generation front end tooling, that's what they call themselves. So let me show you how you can initialize this beautiful white thing. So most of you guys have npm installed on their computer. So if you guys know npm, I think most of you guys know what npm is. It's a package library. How do you download npm? It's pretty simple. I mean, how do you download npm? Let me see. How do you download? The moment you download Node.js, I'm pretty sure you can download npm. Yeah, so you need to download Node.js technically. Yeah, when you download Node.js, it automatically download npm. So I'm pretty sure you guys have downloaded npm. अगर कर लिया, then we can go install Vite. Not Vite, I mean use Vite to install React. So here we have a command. We just copy this command, and what we will do is, no, these are my API keys. Shit, damn, nahi. Okay, I literally exposed my API keys. uh, okay, wait. Before uploading these recordings, we should, we should do something. Wait, I will remove this and then put it somewhere else. Okay, hilarious. So I'll go to some of my one of my project repositories, which I named coding. I have some of my projects over here. So now I'll just copy this whole command, the npm create vite at the rate latest wala command, and the moment I type enter, it'll ask me to provide me the project name. Now that we're learning UseEffect, let me probably just UseEffect. It's the name of your project, so it just creates a folder of with that name. So let me just do this. 1 2 3. It doesn't matter. Now over here you have the now that I told you it's a bundler, right? So it's not necessary that it will only give you like React. You can also initialize something like Angular with this. Before पहले खाली React और Vue रहता था, Vanilla भी रहता था. अब you have also have these guys upgraded and all stuff. Now in React you have a lot of this. So but we are not going to go into that. We will go plain JavaScript. And let's also do React compiler. It's just अच्छा है समझो बस. Do I want to install npm? Install with npm? Yeah, yes. And then this is scaffolding my project, and then let it download. It's taking kind of a long time, but okay. It's not nothing very big, right? I mean, if you would have if in the previous session you guys were initializing with create React app, right now you'll probably just do it with Vite. It's just the same thing, but normally, right? You don't usually initialize with something like create React. It's actually depreciated. Even in the React documentation, they tell you कि भाई don't use create React app. Use something like what is this Vite. Now let me go my coding folder and use effect thingy and yeah, cool. Over here we have some of our folders. Let me close this. I think most of you are familiar with what all are over here because you already covered like 3 sessions of React already. But still, let me just do a revision or something like that. So we have some folders and files over here. आखिर में you'll only you'll write your code in this so-called app.jsx. ठीक है, आखिर में you'll write it over here itself. So not a big deal. One concern that I have is, did we cover Tailwind already? So one question to everybody. So do you guys know what Tailwind is? Tailwind CSS? Come on, guys. Tailwind. Yes or no? Thumbs down, thumbs up, anything. अच्छा ठीक है, जान दो. Because some people are shy. Okay. तो
या कूल। तो अब देखो, हाउ डू वी इनिशियलाइजिंग का सबको तो मालूम है। यू डू npm run dev। The moment you do npm run dev, you can just go and run it. So let me just put this over here. So this is the current folder, that is like current thing that is running. Now what we'll do right now is we'll remove everything and try to write everything from scratch. I think we all know what state is, right? Like you can see over here, there's so much kachara over here. Just remove it for now. Okay. Is this? Yeah. So there's this nice little UI. You know, when you click on count plus plus, this increments. So that is happening because we have a state variable over there, and that's the reason why it is happening. Let me go one thing. थोड़ा बहुत remove some more stuff. ये सब तो मालूम ही होगा आप लोग. It's pretty basic stuff, right? Let's say I want to, reduce the count. How do I do that? I'm just doing some small revisions for states. So, there is this button right over here. यहाँ पर एक बटन है. यहाँ पर बटन है. Button increases the count. Whatever I want to decrement the count, what do I do? Pretty simple. I'll create another button. I'll create another button over here. The button का name is, wait, एक काम करेंगे, increment बोल के बटन बनाएंगे, ठीक है ना? And decrement बोल के बटन बनाएंगे. It doesn't make sense, but you'll get to know something. Now what is happening is ki, in the button thing, what you are technically doing is you have a set count ka state. Now in a state variable, we all know there is a actual value, and then there is this setter or whatever you call updater value thing. So that updater will, update the value of the set of the state. Now you see what is happening. You're calling the set state, and then you're using an arrow function to increment the count over here. What if I just, decrement the count over here? I have a small question, like, do you think the count of both of these buttons will decrement? Like, if I increment this, do you think this will also increment? It's a small question. Pretty obvious, right? Both of them will increment because both of them are linked to the same state. When I decrement this, both of these will decrement because obviously it's all linked to the same state. If you want to make it like a little bit prettier, I could have just make something like एक पैराग्राफ टैग लेके इसके अंदर काउंट बिठा दे तुमने. I'll just remove over here increment, decrement. You see, increment करे तो increment हो रहा, decrement करे तो decrement हो रहा. So pretty basic state level stuff. This is states. I think we all understand what a GSX is, right? Uh, Basically, React renders JavaScript. So everything you write in React is in JavaScript. But how is it in JavaScript? And how, because the browsers to understand only HTML now. How is this JavaScript being converted into all of this? So this bundler that you have, the React ka bundler, the way you downloaded all of this, the weird thing, that thing what it does is it converts your React's code into HTML, CSS, and JavaScript. So under the hood, that is what it is doing. At the end of the day, it's all HTML, CSS, and JavaScript. If you just go and like right click on your browser, you will just see that console यहाँ पर पूरा HTML ही पड़े हुआ है. So and everything is HTML. What happens is कि this JavaScript React का पूरा code gets converted to HTML, CSS using that Vite का bundler. So this is about normal state revision. Now what we'll look into is something like fetch. Okay, so for learning fetch, you need to learn UseEffect. So let us learn UseEffect first. So for using UseEffect, you have to import UseEffect. So you import UseEffect from React. Okay. So let us go slowly. Like जैसे use state था, वैसे ही UseEffect भी एक hook है तुम्हारा. So let me just use it over here. ठीक है ना? If I'm not wrong, use effect को ऐसे इस्तेमाल करते. ठीक है. So yeah. So yeah, let me just correct. Let me just go back to this doc.
I know, I'm pretty sure this is how you do it. Yeah, this is how you do it. And then this is the dependency variable. So this variable that you have, it's like the important part. I think in the newer React version, the dependency variable का थोड़ा dependency कम हो गया होगा, but then yeah, you still look into what this dependency variable is doing. So the whole point of use effect is that कि this thing runs every time you refresh the page. ठीक है? So what if you have something that you want to run every time that you refresh the page? Let me do a console.log right now. ठीक है? This was triggered by use effect. So if there is anything that you want to happen at every time you refresh your page, that is when you use effect. So there is a lot of use cases actually. Oh yeah, a console log was not a proper thing. Let me do an alert instead. It will show me a pop. So the moment I refresh, it will say triggered by use effect. So you see this? Now, yeah, one question you might be thinking right now is कि भाई ये दो बार क्यों print हो रहा है, right? ये दो बार क्यों print हो रहा है? So it's very interesting in React. What happens is कि in your main.js there is something called strict mode. So the strict mode basically renders every time two times. If I'm not wrong, two times. But yeah, safe side की वजह से दो बार enter कर देता है. So let's say I remove this thing, and now let me try this. It's been very long that I tried this. So you see, एक ही बार कर रहा है इन्हें. So it doesn't matter, but maybe sometimes if you want to reduce your API costing, like, let's just assume that this is hitting your API two times. Now, let's not come to the API part right now. I think we're going slowly and nicely. So we know one thing कि UseEffect क्या करता. पहली बात UseEffect क्या करता. Oh my bad, coming from the Python world. UseEffect पहली बात क्या करता. Every time I refresh, this runs, right? Now, what are the possibilities of this? Like, when can I use something like this? And what if कि I can control this running? Like, पहली बात तो every time I refresh the page, this thing will run. The second time, अगर so I don't know how to explain this. The first time कि अगर every time you refresh your page, this thing runs. ठीक है? The second time is कि you you can control this use effect. Okay, basically, so you can control whenever you want this thing to run. Control it using some dependency variable or state dependent. We'll understand this a little better as we go further. So the first use case that we understand is alert. अब मैं थोड़ा क्या ना real world use case पे आता हूँ मैं. ठीक है? So at some moments you would want to display some content the moment you refresh the page, like the moment you come to the page. Now तुम सोच रहे होंगे अरे भाई why would I do something like that, क्योंकि मेरा पूरा content तो मेरे पेज में रहता, like everything will be there in my page itself. So why would I care to refresh initialize a function that will generate me some content? Like that would be your question, right? But think about it. Do you think कि say I go to amazon.in, do you think all of this data is hard coded? Like because today, let's say I search for cars, I got this result, right? So let's say I refresh it, I might not get the same result. So don't you think that data that is coming is dynamically coming? So when the data that is coming is dynamic, don't you think it's something like use effect will be very convenient, where some function, let's say there's this black box function that will run every time, और वो function every time जब मैं refresh करता हूँ मेरे लिए data ले लेके आता. ठीक है? At times that might lead to same data or different type of data, that doesn't matter. But because the data is not there with me, the data is there somewhere out there, I'm pulling that data, right? I'm pulling that data and then I'm showing it on my website.
So now let us come to the real thing, right? In majority of websites that require dynamic content. So when I mean dynamic content, okay, there's something called static websites and there is something called the dynamic website. So if you go to this tsig website, tsig mjct.n, is it that? My bad. Let's just type tsig. Oh yeah, so there's this tsig key website, right? So this is a static website, right? We see everything that comes on this doesn't change, like it's the same thing. Like you refresh it again, it's the same thing. But you see, some websites are not static, like the one in Amazon ki website is not static, it is kind of a dynamic. So when you write something like a TCK website, you would probably write this whole code in HTML and CSS, and then just that code you're gonna display that code. But this code is rendered, the whole this die cast SUV toy, that is not written in their code, right? This thing, this data that they're having, they're fetching it from some database, and that database is coming to their front end, and that data they're they're showcasing to the to the users. So something like this happens. So you have a backend, or let's say a database. It's not over complicated for now. I think we understand what databases and backends are. So the moment, so what happens is from the front end, you are going to fetch the data. No, listen to this word fetch, because we are gonna learn how to fetch the data, right? There is some database over here, and this is my front end, right? This is my React ka front end. So from this front end, I'm going to get some data, and then I'm going to display it on my website ka page. Okay, in terms of divs, in terms of boxes, in terms of beautiful UI. But internally, this data is just plain text. It is just in the form of JSON. You get me? All of this data is just in the form of raw JSON. So what is JSON? If you guys know what JavaScript is, right? If you guys know what JavaScript is, you might understand what JSON is very easily. So JavaScript में objects रहते हैं. So JSON stands for my goodness, JavaScript object notation. So JavaScript object notation, matlab to JavaScript object notation. How does an object look like in something? Let's say, where is that man? Yeah, text. Yeah. So how does an object look like? So object looks like this, right? Object में क्या रहता है? Key और value पे रहता है. So key मेरी, let's say, name हो गया, right? So the name में क्या आता मेरा नाम समी है. So मेरा name आता. Oh, not some. So name, and then it's my roll number, right? And then roll number, let's say it is something 150. Okay, and then we have my whatever. This is relevant. It's fine. So what happens is, let's say, okay, let's say you are OU you want to display OUK. Let's say you want to display OUK marks. Okay. So in a typical website, I'll tell you what will happen, right? What happens is that कि OU की वेबसाइट में तुम जाते कि यहाँ पर तुम रोल नंबर डालते, ठीक है? तो द मोमेंट यू पुट ए रोल नंबर, तुम्हारे डेटाबेस में क्वेरी जाती, ठीक है? आई मीन दिस इज व्हाट हैपेंस नॉर्मली, या दिस इज व्हाट हैपेंस. तो तुम्हारे डेटाबेस में क्वेरी जाती कि भाई मेरे को ये डेटा होना है. तो अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, अगर इफ यू यूजिंग नो सीक्वल और सीक्वल डजंट मैटर, योर डेटा विल लुक इन दिस फॉर्मेट कि भाई मेरे को 150 रोल नंबर के मैथमेटिक्स के मार्क्स बोलो. तो उन्हें जाके तुम्हारे को ये डेटा में, ऐसा एक ब्रैकेट वाले डेटा में तुम्हारे को डेटा देता, ठीक है? अब लेट्स से उन्हें बोला, अब यू आर समथिंग लाइक दिस कि ना, गिव मी द मार्क्स ऑफ ऑल द पीपल ऑफ लेट्स से CSE डिपार्टमेंट, ठीक है? नाउ यू हैव अ बंच ऑफ जेसन्स, यू हैव अ बंच ऑफ जेसन्स रहते, तो हाउ वुड इट लुक लाइक? So this will look like this. So let's say this is my name, Sunny, my department, CSE,
marks 23. So what will happen is you want all of the people's data now. So what? So it will provide you in the form of an array. The data will be provided you in the form of an array. So you see this is an array. तो ये जो JSON ही रहता, but एक array में multiple JSONs रहते, so that you can use something like a for loop. You can use like a for each or something, and then you can loop through all of this data, and then you can showcase this data in the form of cards in the UI. Are we on the same page, guys? एंड देन ये कैसा करते, ये फेच करते ये डेटा, और फेच किस में करते, द मोमेंट यू रिफ्रेश, द मोमेंट यू कम टू द वेबसाइट, आई वांट द डेटा ओवर, or the moment I click this button I want the data. How do you trigger that? You trigger that by using something like a use effect. So guys, are we on the same page? Hello. Okay, nice. So if you guys are feeling like थोड़ा difficult हो रहा, सिर के ऊपर से जा रहा, I'm fine, we can slow it down. We can take your doubts, we can cover each and everything, and very slowly. ठीक है, I am totally free. I'm free till 9:30 10 o'clock or something. It's fine, but we're gonna finish it fast regardless. ठीक है ना? I'm spending a little bit more time over here so that you can understand the concept. But yeah, I have to go, by the way. I'll be back in around by 8:40, 8:40. I cannot come back this fast. 8:50, ठीक है ना? I'll be back fast. ठीक है, उसके बाद we'll try to code this whole thing up, and we'll see all of the other stuff also. ठीक है ना? ठीक है, we'll be back in some time.
Yeah, so cool. I am back and I'm pretty late. But yeah, let's continue our discussion on where were we? So, yes. So the data that you get from any API or any backend looks like in this format. So I would like to show you one sort of data. Like I think I have it. Okay, let's learn how to first fetch the data. Okay, then we'll look at something like actual data कैसा होता, ठीक है ना? And yeah, one other thing, the dependency array that I showed you, right? अपन क्या कर सकते हैं मतलब? So when do you think I told you that through a control state we can trigger this use effect? So how do you think we can do that? One easy way to do that is to use something like the count variable. Let's say I pass in over here, okay? So you need to just pass in the dependency over here. So जिसकी भी dependency है ना, अगर let's say यहाँ पर count variable अगर डाला, तो every time that I change this count variable, this alert will get triggered. So this use effect firstly will run every time I refresh the page. Secondly, every time I increment or decrement the count, this use effect will start working. I think let's try this out right now. So when I go to this place, I refreshed, I got this thing, right? Two times because strict mode. Okay? Increment, I got one time. Decrement, I got one. So you guys understand, right? कि the dependency basically means that जब भी तुम्हारा कोई ना कोई state change हो रहा, you're refreshing it again. So when do you think this is very much helpful? Like it's very helpful when your dynamic states require अगर वो टाइम पे अगर कुछ you had to जो data है तुम्हारा, you have to refresh the data, the whole thing, you want to re-render the whole page again. How do you do that? You do that based on this count variable. So कोई ना कोई तुम्हारा एक dependency रहता, वो dependency के हिसाब से तुम्हारा जो पूरा पेज है वो re-render हो जाता. So you might see right कि यहाँ पर थोड़ा कभी कभी है ना एक refresh icon रहता है यहाँ पर, तो कभी कभी you don't have to do this hard reset. Some places I'm pretty sure you might have कुछ refresh icon जब click करे तो पूरा जो भी है वो नया पूरा state बन जाता. I'll show you one other project that I have, or we can try to implement something cool with maybe like a to do or something, and then we'll see how we can do that. अब देखो यहाँ पर use effect आ गया, अपन देखिए कि count इंक्रीमेंट करे तब है ना ये जो use effect है वो हिट हो रहा. अब क्या करेंगे हम लोग, देखो let's search for some APIs that we use. So firstly I'll tell you what a fetch is. तो fetch जैसे मैं बोला आपको, there are some APIs out there, standard APIs, or maybe your backend itself. How do you call your backend? From a front end, how do you call your specific backend? You call it through an fetch API. So fetch is basically a function that basically does an HTTP request. So how do computers communicate with each other? So your front end is sitting on a computer, like the front end that you have, like the computer that you have running over here at your local host. ये जो लोकल होस्ट है उसके ऊपर पोर्ट चल रहा कुछ, जब मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ यहाँ पर, what does this mean? Local host 5174. This means that my front end is running at local host. Local host मतलब मेरे कंप्यूटर पे there are multiple ports. I mean, yeah, so every computer has a lot of ports. So जो local host है for React, it is designated port 5174 is a designated port by the React people, or the we they're just like मेरे को 5174 पे ही run करना है. तो let's say if you run another application, it's the same thing. अगर तुमको दो बार run करना है, you do npm run here also. You see over here कि local host, ये वाला local host 5174 पे रन कर रहा है और ये वाला local host 5175 पे रन कर रहा है. Both of them are different instances.
So you see, this is a different thing, this is a different thing, because these both are running differently on different ports. Oh my goodness. So if you look at it over here, this one is 5174 wala, and let me do one thing. ये जो duplicate रहता है ना यार option, देखो light localhost, I'll open the 5175. Wait, this is 5174 and this is the 5175. You see, these both are different. अरे भाई मेरे भाई, हाँ, तो this is different, this is different. Now let's say if I increment this, एक बार increment हुआ, दो बार increment हुआ, this thing won't get incremented because this is a separate process. This is a separate process. So I wanted to explain that. Let's be clear with that. So ये जो फ्रंट एंड है मेरा, ये फ्रंट एंड के कोई पोर्ट से, पोर्ट लेट्स से अब वही जो 5173 होगा, कुछ तो भी होगा, ये पोर्ट से हम एक एपीआई को हिट करते या कोई बैकएंड को हिट करते। अब देखो एपीआई भी एक तरीके का एक बैकएंड ही है, मगर ये है ना एक्सपोज्ड रहते इंटरनेट को, कोई भी जाके हिट कर सकता है। बैकएंड जो है तुम्हारे खुद के बैकएंड है जो तुम खुद बनाते, जैसे कि नोड.जेएस में बैकएंड बनाए। लेट्स से अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आप आपका जो बैकएंड है आप नोड.जेएस में बनाएंगे, या मतलब इफ यू वांट टू बी अ मर्न स्टैक इंजीनियर यू विल प्रोबब्ली डू दैट। तो जो बैकएंड जब तुम्हारा बनता, उसका भी तुम्हें कोई पोर्ट पर रन करते, लोकल होस्ट लेट्स से 3000 पर रन करते, ठीक है। नाउ that's the point, right? Like when you're running things locally, ये तुम्हारा backend एक दूसरे पोर्ट पे रन करता है। So when you want to communicate from your front end to your backend, you will do a fetch request to a particular, route of your backend. अब इसमें looks confusing. What is a route? What is backend? What is API? But fine. We are in a React class. It's fine. We are understanding stuff. Every backend, ठीक है, every backend has some specific ports exposed, ठीक है, you don't have to remember that, they have it in their documentation. Every API has some specific, sorry, ports बोला मैं, routes. Every API has some specific routes. So when you hit that route of that API, some resultant it will return you, कुछ डेटा उन्हें रिटर्न करता, ठीक है ना। यहाँ पर लेट मी शो यू सम चाय और कोड फ्री एपीआई, या दिस इज फ्री एपीआई। व्हाट, नहीं भाई, कुछ था वो रीड द डॉक्स, या दिस वन ओनली, दिस वन। सो दिस इज ए रैंडम पर्सन, बहुत अच्छा आदमी था। उन्हें क्या करा, उन्हें अपने एपीआई को है ना पब्लिक डाल दिया। तो आई टेल यू वन थिंग, इधर है ना, मैं लेट अस डू इट थोड़ा अच्छे से। यहाँ पे पाइथन का है, जावास्क्रिप्ट का ही नहीं है बाबा, सच, ठीक है चलो। अब देखो ये एक एपीआई है, एपीआई तो समझ गया ना, कोई बैकएंड पड़े हुआ है, वो डेटा अपने को देता डेटा। अगर अब देखो यहाँ पर एक गेट यूजर्स बोल के एपीआई है। अब देखो सोचो, अब कोई भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन में है आप, ठीक है, आप एडमिन है वहाँ के, आपको मेरे 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 जो वेबसाइट पे है पूरे यूजर्स कौन से मेरे को मालूम करना है। तो तुम्हारे पास एक एंड पॉइंट रहता पड़े हुआ, ठीक है। अब तुम डेवलपर है, फ्रंट एंड डेवलपर है, तुम्हारा काम क्या है कि तुम क्या करते, यू विल गो एंड हिट दिस एपीआई, एंड जो भी डेटा मेरे को मिल रहा है इसमें से, आई विल रेंडर इट ऑन माय पेज। एवरीथिंग दैट आई गेट ओवर हियर आई रेंडर इट ऑन माय फ्रंट एंड, ठीक है। लेट मी टेल दिस अगेन सो दैट वी आर ऑल क्लियर। मेरा बैकएंड ये है, मेरा एपीआई बैकएंड जो भी बुला लो, ठीक है। मैं एक फेच रिक्वेस्ट, ओके, ये जो फेच बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट माय बैकएंड, यू गेटिंग मी, दिस इज हाउ आई विल फेच इट। ये जो यूआरएल दिख रहा ना, ये जो यूआरएल है, राइट, दिस इज वेयर माय बैकएंड इज residing. Think of it like that, ठीक है। what we are doing is we are calling this thing, this has an address, ठीक है, we are calling this backend and telling them कि तुम्हारे URL पे जो भी है वो मुझे दे दो, ठीक है, when I'm doing this fetch request,
ठीक है। अब फेच में भी देयर डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, जैसे गेट रिक्वेस्ट, जैसे पोस्ट रिक्वेस्ट एक्सेट्रा, बट लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स गो टू द गेट, लेट्स बी इन द गेट एरिया, गेट में रहेंगे अपन, ठीक है। अब ये जो है ये कोई तो भी बैकएंड पड़ेगा, अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता बैकएंड पर, मेरे को बस बात करना, मेरे को बस डेटा निकालना है वो बैकएंड से, राइट, दैट इज व्हाट आई वांट टू डू। सो ये जो यहाँ पर कर रहे हैं ना, अपन भी ऐसे करेंगे, चलो। तो जब मैं ये इसको हिट करता हूँ, राइट, आई वांट टू सी दिस होल थिंग। So this is the entire URL of the backend. जैसे फ्रंट एंड्स की भी URL रहती है, जैसे www.tsig.mjct.in जैसे है ना, वैसे इसकी भी एक स्पेसिफिक URL रहती है, यूजुअली हर बैकएंड की रहती है एक URL। तो हम क्या करते, ये URL को हिट करते वहां से डेटा निकालते, ठीक है, राइट। अब देखो, you see something over here, the data that you are getting, जब मैं बोला था आपको डेटा आपको जेसन फॉर्मेट में मिलता, और एवरीथिंग इज इन द जेसन, लेट्स स्टडी दिस डेटा, यू नो, लेट्स ट्राई टू स्टडी हाउ दिस डेटा लुक लाइक, ठीक है। यहाँ पर एक, दिस माइट नॉट लुक वेरी बेसिक, बट आई विल ट्राई टू मेक इट अ लिटिल इजियर फॉर यू गाइस। अम्मा, इट्स टू मच ये बहुत बड़ा डेटा है। let's look at it like this। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है मालूम, लेट्स डू वन थिंग, जेसन अगर कोई भी बड़ा डेटा मिला तो जेसन प्रेटिफायर कुछ बोल के एक रहता है, so this will, you know, format your JSON so we can learn about this properly। So this is upload data करेंगे, no not this भाई, यहाँ पर कैसा, हाँ, format and beautify, तो if you can see over here यहाँ पर beautify करके देता हूँ। so at the end of the day क्या हो रहा है यहाँ पर, इस देखो, this entire data that is providing me this this API, when I do a fetch, when I'm getting data from it, it is providing me this data, ठीक है ना, मतलब technically I'm hitting that API, it's providing me the data and that data looks like this, ठीक है। अब वो डेटा में क्या है देखेंगे यहाँ पे, तो we know what this is a JavaScript object, opening bracket closing bracket, उसमें we have keys, ठीक है ना। लेट्स नॉट लुक इनटू व्हाट दिस गंदा सा चीजेस, वी लुक एट दिस। पहला की क्या है, डेटा की है मेरा, सेकंड की क्या है मेरा, मैसेजेस की है मेरा, थर्ड की क्या है मेरा, स्टेटस कोड सक्सेस, थर्ड की है, फोर्थ की। तो एवरीथिंग गिव्स की वैल्यू पर, तो मालूम है हमारे को, जावा के पढ़े हुए हैं हम लोग, तो ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू। मगर लेट्स से मैं जो वैल्यू में एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट डाल दिया तो कर सकता ना मैं, because if I want to provide complex data, now what is it telling it when it telling to data दो मेरे को, तो it firstly जो backend है पहले बोल रहा है मेरे को, पहले तो डेटा में दे रहा है, तो डेटा की एक फॉर्मेट करके डेटा में डेटा दे रहा, ठीक है। बिकॉज देयर आर सम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कि मैं डायरेक्टली मैं डेटा नहीं दे सकता, आई नीड टू सेंड सम, यू नो, मेटा डेटा आल्सो साथ में, जैसे कि ये मैसेज है, रैंडम यूजर फेच सक्सेसफुली, तो इट्स टेलिंग कि है ना, फ्रंट एंड को बोल रहा है अच्छा मैं तुम्हारे को फेच करके लाके दे दिया, ठीक है। अभी स्टेटस कोड बोल के मतलब क्या है कि 200, मतलब कि अभी तो देखो मत, स्टेटस कोड बोल के कुछ रहता है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस, 200 का मतलब क्या है, 100 का मतलब, कभी 404 आया, कभी 502, कभी वेबसाइट में गए तो समझ में आता है एरर है कुछ, तो 200 में आया तो उसका मतलब है सक्सेसफुली तुम्हारा रिक्वेस्ट चले गई, ये आ गई, ठीक है, राइट। अभी 200 means this and then success true means success true, इसके अंदर your data is of this sort, ठीक है, राइट। दिस थिंग हैज अगेन सम मोर सॉर्ट ऑफ डेटा, इसके अंदर डेटा का एक एरे है, समझे, और ये एरे के अंदर देयर आर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, आई होप आई एम नॉट स्कैरिंग यू गाइस विद दिस, ठीक है, बिकॉज देखो बेसिक तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, इट टेक्स सम, इफ यू गाइस वांट टू अंडरस्टैंड थोड़ा बहुत अच्छे से ही समझ लो, ठीक है, हाउ रियल डेटा इज एंड हाउ फ्रंट एंड engineers how they render could with this complex type of, this is not complex but decently, like, you know, how do you render this type of data, and we'll actually do it right now, we'll render this data right now, we'll use this API and then, you know, before the class ends we'll, you know, make a nice page or something and then, you know, do that, ठीक है ना, कूल। तो डेटा है यहाँ पर अपने पास, और डेटा के अंदर अपने पास और, यू नो,
क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स है। ये ऑब्जेक्ट में अपने पास और भी चीज़ें हैं। यहाँ पर वी हैव दिस पर्सन्स MD5 नेम, नेम है, पिक्चर है, ओके पिक्चर भी है इसकी, नाइस, प्रिटी नाइस, इसकी एज है। तो चलो ट्राई करेंगे इसको अपन, है ना। दिस लुक्स लाइक ए कॉम्प्लेक्स डेटा बट वी विल ट्राई टू अनकॉम्प्लेक्सिफाई इट एंड देन यू ट्राई टू रेंडर इट ऑन आवर पेज, ठीक है। इसके लिए I'll make state variables, I'll do all of that stuff, ठीक है। फर्स्ट लेट्स ट्राई टू फेच द डेटा, ठीक है। अब मैं इधर देखा ना ये डेटा को, अब मेरे कंप्यूटर पे मैं देखता हूँ ये डेटा को, ठीक है ना। अब ये थोड़ा ज़्यादा ही जूम इन कर लिया मैं, थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ। नाउ नाउ दैट आई टोल्ड यू कि फेच का जो फंक्शन है वो मैं कहाँ लिखूँ, तो ऑब्वियसली यूज इफेक्ट में ही लिखूंगा ना, ठीक है। स्टैंडर्ड वे इसकी अपनी अभी ना क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, वो फंक्शन में हमारा फेच लिखेंगे, ठीक है। फंक्शन इज fetch user data, and then in this we'll do this, we'll do this, we'll do this. Arrow functions, everybody knows what arrow functions are, right? Like, just in case if people don't know, let me not do this. Function get user data. I hope I remember how to write the normal function. This is this, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे मालूम, गेट यूजर डेटा है ना, अभी अपन फेच करेंगे। फेच बोल के एक इंटरनल टूल रहता, ठीक है, रिएक्ट में या जावास्क्रिप्ट में ही रहता फेच बोल के। यहाँ पर बस अपने को यूआरएल डाल देने का रहता। तो व्हाट आई डू इज, यहाँ पर जो यूआरएल है मेरे पास, कहाँ गया भाई, हाँ ये यूआरएल है ना, ये पूरा फेच का ही दे दिया हमें। सो जस्ट do one thing, I will put the entire fetch over here and then fetch will result me with some data, right? तो वो भी तो मेरे को होना है ना, तो डेटा बोल के डेटा एक्चुअली रिस्पॉन्स, क्योंकि डेटा फेच के अंदर भी थोड़ा डेटा बोल के कुछ है। सो विल डू कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, I'm gonna respond that and then I'll do get user data and let's see if this works, ठीक है। I know there should be one issue, I'm pretty sure आप लोग भी guess कर लिए होंगे what that issue is. Which one should I run? So you see some error came up, so it's saying key response is not defined. So this means I have to add something like await over here and function async, function से पहले आता क्या है, should I do, yeah, let's see. Response is not defined again. Okay, let me see, maybe I have to put an await here also then. Sadly, if I put an await over here, that would mean that this user effect should also be, can you make an user effect async? I'm pretty sure you can't. Let's search it up, Google या GPT. Response is not defined. So let's see how they did it over here. So in the async thing, okay, they're using dot then. Okay. Async await. Let's try. Let's just copy this code and see. So what we are doing over here is pretty similar to what this is happening. थोड़ा मेरे को ना indentation कर लेने दो. So we'll do one thing. We will comment out this one. Oh my bad. We have to await the response also, and then JSON with them. I forgot about that. And then voila, so you get some data. Like this is a lot of data. We can try using this data, but now that I promised कि मैं वो ही इस्तेमाल करूँगा. So this code is pretty relatively simple. Why that didn't work? इसकी जो response है
रिस्पॉन्स को भी अवेट करके डॉट जेसन करने का रहता। सो बिकॉज नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज कि लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू गाइस। जो डेटा फ्लो होता फ्रॉम बैक एंड टू फ्रंट एंड और एनीवेयर, ठीक है, इट फ्लोज इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। एक्चुअली स्ट्रिंग्स भी नहीं, बाइनरी में फ्लो होता है, एवरीथिंग गोज इन बाइनरी। इफ यू गाइस अंडरस्टैंड, इंटरनेट से डेटा पास होता है बाइनरी में। these binaries will get converted back to the strings, or you know what, characters or strings. Now we know that these characters and strings, these are character string size, so you need to convert them back into something like JSON, क्योंकि JavaScript only understands JSON. If you want to pick out data, you need to get JSON over here. So डॉट JSON करने के बाद अवेट कर लेते हो ये, ठीक है। प्रीटी सिंपल डेटा, प्रीटी सिंपल है ये। इंस्टेड आई डू वन थिंग, मैं यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है, ओ शिट, आई एम कमिंग फ्रॉम अ पाइथन प्लेस, तो मैं कांस्ट डालना भी भूल गया यहाँ पे, सैड एक्चुअली में। अब देखो, लेट्स रन दिस। कहाँ हूँ मैं? The moment I refresh it, I'll get the data over here. तो जैसे मैं बोला, मैं ये डेटा को कहीं स्टोर करने वाला हूँ, ठीक है। सो व्हाट डू आई नीड, मेरे को यूजर्स होना था ना, तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक इमेज उठाता हूँ यूजर की। अब आई नो वेयर द इमेज इज बिकॉज आई सॉ इट ओवर हियर। तो वेट नॉट दिस, कहाँ गया वो जेसन प्रेटी फॉर्मेट अर्थिंग। अब देखो, पहले तो मैं है ना, पूरा डेटा है ना, ये डेटा वाला जो भी है ना, ये पूरा डेटा सेल है ना, आई विल स्टोर इट, आई स्टोर इट समवेयर, आई स्टोर इट इन अ स्टेट। तो हियर्स माय प्लान, लिसन टू माय प्लान। सो देयर इज वन डेटा, डेटा के अंदर अनदर डेटा, तो लेट मी प्रिंट इट आउट एंड पहले अच्छे से समझ में आता। तो ये जो डेटा है ना, दिस इज द ओरिजिनल थिंग। आई थिंक आई कैन प्रिंट एंड शो यू गाइस। ओरिजिनल रिस्पॉन्स, ठीक है। इसके अंदर वेट, लेट्स कॉल दिस रिस्पॉन्स फाइनल, कुछ ऐसा, because I'm getting confused, you get confused because, ठीक है, इसके अंदर एक डेटा है, क्योंकि दिस रिस्पॉन्स फाइनल इज द होल थिंग, ये एंटायर जेसन मिलता है अपने को, डेटा तो जेसन के फॉर्मेट में रहता। तो अब ये एंटायर जेसन मेरे को इसके अंदर डेटा में जाना था। हाउ डू आई डू दैट? प्रीटी सिंपल, राइट? कंसोल डॉट लॉग, एक्चुअली मैं लॉग्स बाद में करता हूँ। तो second final data, I don't know what to name it, let's call it P over here. तो response final dot data में ये आ जाता, क्या ये डेटा में आ जाता मैं, ठीक है। फिर जब मैं ये डेटा प्रिंट करता हूँ, इसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट होती है, तो ये पूरा जो है, राइट, ये पूरा प्रिंट होता है मेरे को। सो दैट इज दिस वंस। अब इसके अंदर का एक डेटा है, राइट, आई विल गो टू दैट एंड आई जस्ट, आई एम आउट ऑफ variable names, so just cons, yeah, python में usually don't define this, so I get confused sometimes, भूल जाता हूँ मैं कि भाई मैं जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, पाइथन में लिख रहा हूँ। सो रिस्पॉन्स फाइनल डॉट, अब सॉरी, तो ये मैं पी में देख रहा हूँ ना, तो पी डॉट डेटा लिखता हूँ। ओह माय गुडनेस, ठीक है। नाउ व्हाट आई डू इज कंसोल डॉट लॉग, आई प्रिंट पी, हा 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 2, ठीक है। सो यू सी ना, मैंने रीसेट दिस, तो देखो दिस इज, हाँ वाला जो पी वाला है ना, ये पूरा डेटा है, ठीक है। अब ये इसके अंदर का है, तो ये जो दिख रहा ना, दिस थिंग, उसका यहाँ पर है, तो मैं डॉट डेटा में गया, और इसके अंदर का जो डेटा है, दिस इज द रियल डेटा दैट आई नीड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो डेटा है ना, मैं इसको एक स्टेट में स्टोर कर लेता हूँ, कॉन्स यूजर। सो एक तरीके का फॉर्मेट है कि आप है ना, जब भी नेम्स कर रहे, कन्वेंशन कैमल केस में नेम करना एटलीस्ट स्टेट्स आपके। सो या यूज कैमल केस गाइस, इट्स अ स्टैंडर्ड,
let's just put this 0 for now. And over here set user data, इसके अंदर मैं क्या करूँ, ये जो मेरा क्यू है ना वो सेट करूँगा, ठीक है। तो द मोमेंट आई सी दिस आई विल, एक चीज़ हो जाती है कि है ना मेरा डेटा यहाँ पर स्टेट में स्टोर होके रहता, तब स्टेट में स्टोर हो गया तो व्हाट डू आई डू नाउ, दिस इज टेक्निकली एन एरे राइट ऑनेस्टली, क्योंकि जो यूज़र डेटा है, ये जो आखिर में जो डेटा आया ये मेरे को एक एरे मिल रही है ना, दिस इज एन एरे, इफ यू गाइस लुक अप क्लोज, दिस इज एन एरे ओवर हियर। सो एरे एरे है तो यू कैन यूज दिस एरे मेथड्स। तो एरे मेथड्स क्या थे, एरे rendering in React, rendering list, how do you do that, you'll use something like a map, right, list items people dot map, ये तो मैं नहीं करने वाला हूँ, I'll do this, ये क्या पुराना रिएक्ट है यार, ओ भाई, हाँ yes this one we'll do this, so we will go here. I am pretty sure you can write a React code like this. So if you want to write JavaScript का code inside your, अब अभी देखो normally everything that you write over here is JSX, so it's basically खाली this is HTML only ना. What if you want to write JavaScript? So that's the reason it's called JSX, right? So you open the bracket over here, damn, and then you loop. So user dot data करो, user data dot map, right, and then this is an arrow function. I'm pretty sure it works like this. Okay, इसके बाद मैं इसके अंदर है ना मेरे divs वगैरह बना सकता हूँ, ठीक है। So every data that I get, first let me just try to get some data. Actually एक पैरामीटर पास करने का रहता, so let's call it d over here. So ये जो पूरा डेटा है, अब क्या होता मालूम, let me just print t for now so that you guys can understand it. Hopefully it should print though. Wait, some error shouldn't come up. User data dot map is not a function. Is my syntax wrong? You know what, let's ask GPT. Let's ask GPT what is the way to, how to render a state in React. Wait, no, not this. Items dot, so it's the same thing that I did, but yeah, there is something called index also, and then in the map item, items dot map. Okay, this is the wrong. So you need to not use a curly bracket and use a, you see this type of bracket, a circular thingy bracket. So when you do that, and this should work. If this doesn't work, we'll just put the whole code to GPT and then it probably. So user data dot map is again not a function apparently. Let's see. Let's try to debug this. User data dot map, and then you have an open bracket over here, and then you have something like this. Okay, give me a second. So what does GPT say over here? So items का एक map है, not just one thing. Let's do one thing. No, nothing bad using AI actually. You know, sometimes you just get stuck. Oh yeah, makes sense. Yeah, this shouldn't technically run, but I wanted to showcase it. Let's just do it the right way. So initially user data is anyways an array. So, and then in this D we have
we have some sort of data right over here. Let me see. So the final original response that you get will be the data from here. So in this you have something called gender. So every time you loop this specific object, so every time that you loop, oh my goodness, you see every array has a specific object, so you'll go through each and every object. So each and every object you have something called an email. So let us render that t dot email paragraph tag में. Let me do this properly. Damn, I might have forgotten the syntax. It's embarrassing. Yeah, so you can see over here जितने भी डेटा थे उन लोग की मेरे को emails मिल गए यहाँ पर. तो here's what I'm doing. I'm looping through each and every object and then I am rendering the email over here. So what I can do right now is class name. इसका class name क्या था? इसका class name कुछ और था. Let's name it something. Card. I'll do some CSS magic. Yeah, where do I write, here or here? Card. I forgot CSS, guys. I need your help. This is dot for a class and bg color, background color will be my red. Yeah, this looks bad, but and we'll do one thing. We'll do a padding also. Padding of a total 20 px. So each of them will be, oh, okay, I should do a margin so that everyone is margin of a 10px, I guess. Okay, this looks fine. What I'll do right now is I will create a width. क्या आती width में भी 30 px का देंगे अपन. अरे भाई बहुत कम ही कर दिए width. 300 कर देंगे width को. अरे now looks बहुत अच्छा दिख रहा है. Not बहुत अच्छा मगर something that looks decent. Let's make a better color. I don't like the red color. It's मेरी आंखों को चुभ रहा है. White smoke. Okay, nice. तो अब देखो now we understand right कि यहाँ पर डेटा रेंडर हो रहा. अब देखो जब भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे रहता है ऐसे ही रेंडर करते डेटा. अब एक चीज़ रेंडर करा मैं. लेट मी रेंडर सम मोर स्टफ राइट. अब देखो राइट साइड में मैं जब स्टेट है ना उसको प्रिंट कर रहा था. और चीज़ें क्या है इसके अंदर देखेंगे. इसके अंदर डेटा के अंदर जेंडर भी है ना. तो मैं क्या करता हूँ, रुक जाओ. आई विल गो ओवर हियर. So we will do a very big section where we'll take doubts also. ठीक है guys, so don't worry if you guys don't understand a specific part. ठीक है ना, it's totally fine. So it will say this is email. तो email का ऐसा इधर रहता and then एक फिर से p tag बना रहा हूँ मैं and then p tag इसमें अपन gender डालेंगे. ठीक है ना, gender and इसके अंदर what we have, oh my goodness, d dot gender. ठीक है. एंड वन अदर थिंग, देयर इज पिक्चर आल्सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इसके अंदर आई कैन सी ए पिक्चर आल्सो. डेट ऑफ बर्थ भी है बट जेंडर है, आईडी है, लोकेशन है, लॉगिन है, नेम है. तो इन द नेम वी कैन प्रिंट, इन द नेम देयर इज एन ऑब्जेक्ट. सो व्हाट आई विल डू इज इन दिस p tag देयर इज दिस नेम राइट. तो फर्स्ट इज द d डॉट नेम. ठीक है ना. नॉर्मली अपन ये डेटा में, आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, अपन ये पॉइंट पे और अपन ईच एरे के अंदर लूप कर रहे हैं. तो ईच एरे के अंदर जो नेम है राइट, नेम इज अंदर नेम डॉट फर्स्ट या नेम डॉट टाइटल. सो विल डू नेम डॉट टाइटल, नेम डॉट टाइटल, फिर t dot name dot what is that, first t dot name dot last. ठीक है ना. तो इसी अपने को ये डेटा मिल गया, नेम मिल गया, ईमेल मिल गया. एक काम करेंगे अपन, विड्थ थोड़ी बना देंगे, विड्थ थोड़ी बढ़ा देंगे.
390 कर लेंगे, जेंडर फीमेल, उसके ऊपर अपन हमें पिक्चर डाल लेंगे क्योंकि यहाँ पर पिक्चर भी है ना अवेलेबल। यहाँ पर रिफ्रेश करें तो यहाँ पर पिक्चर भी मिल जाती है अवेलेबल। सो डेटा में पिक्चर भी अवेलेबल है। डेटा देन इन एनी ऑफ द प्लेसेस देयर इज ए पिक्चर बोल के, पिक्चर डॉट मीडियम या लार्ज कुछ भी, पिक्चर डॉट सो यू गो टू योर डेटा पॉइंट देन डॉट पिक्चर डॉट मीडियम। ठीक है, अब पिक्चर्स कैसे रन करते हैं, ऑब्वियसली यू नीड पिक्चर टैग, यू डोंट रेंडर ए पिक्चर इन ए पी टैग राइट। इमेज सोर्स में d डॉट पिक्चर डॉट मीडियम, इसका ऑल टैग पिक्चर ऑफ पर्सन, ठीक है ना। कैसी ओवर हियर पिक्चर प्रिंट हो गई ना सबकी। लेट मी डू लार्ज, आई थिंक लार्ज में बेहतर पिक्चर होंगी। सो यू सी लार्ज में थोड़ी बेहतर पिक्चर है। सो इफ आई डिडंट, लेट्स से आई डिडंट पुट ए वेट, आई थिंक इसको अब थोड़ा ब्यूटीफाई कर सकते हैं हम लोग, डजंट मैटर, maybe do a flex or something over here, so put a div around this। अरे भाई div आ जा। इसको एक क्लास नेम दे देंगे section and then dot section and then flex auto या डिस्प्ले करना था ना, पहले डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं। आई थिंक यू गाइस आर रिविजिटिंग योर display flex align items center, so you can see this right। अब ऑब्वियसली ये बहुत गंदा हो रहा है क्योंकि मैं विथ नहीं हेड करा इसकी, विथ और लेट्स से स्क्रीन max, no wait, let's put a 900 px width। oh I think I forgot how to do css I guess। align content center, फिर क्या था align justify content flex start, okay, regardless I don't know, I don't remember that, but yeah, regardless you can see there's this card rendering, so let's say I refresh this, obviously that API is hit every time I'm refreshing it right। so there are different stuff you can do out of it right, like अब you know you used a fetch API now, अब fetch API इस्तेमाल करें आप, fetch करें डेटा को, अब डेटा को fetch करने के बाद you have render it on your screen using what did you use over here, you used your let's just remove this off, so you have your UseEffect से तुम क्या करें fetch करें right। this happens every time जो है ना, जब रिफ्रेश करते ये रिफ्रेश करते आप आपकी स्क्रीन को, ये फिर से है ना ई पे हिट होती, क्यों हिट होती, बिकॉज योर या ये जो है ना फंक्शन इट्स इनसाइड योर इफेक्ट, इफ इट वाजंट, लेट्स से इफ इट वाजंट, ठीक है ना, लेट्स से इट वाजंट, it still runs on, it does run right now but sometime it doesn't because you see क्या होता मालूम, every time you refresh this function might not get called right, so that is one of the issues, so it is all it is actually recommended and it is always ऐसी होता कि ना every function call that that you're hitting like to somewhere else like a backend or an API, it's always recommended that you do it inside a use effect itself, take care right, and we also rendered the whole thing over here। I'll remove this whole thing, oh nahi ruk jao, I shouldn't have removed this part, id center अरे भाई रेंडर हो जा, सेक्शन, ओ हाँ ये div था, ये कार्ड था,
आई थिंक मैं प्रॉपरली इसको यूज इफेक्ट में है ये. Let me see. Oh, yeah, so you can see the data is rendering over here, and then the names are printed over here. So yeah, kind of makes sense. So any doubts? So we understood this, and then actually late भी हो गया. बाकी का we can cover tomorrow. ठीक है ना? Do you guys have any doubts? Guys, अरे thumbs down. कितना बुरा पड़ा है हमें? Shit यार. Okay, nice. I was just kidding. So no doubts. That's nice. That's nice. Did you understand the session? That's nice. So did you guys understand the session? What do you think, Apan? Yeah, cool. Yeah, I get it. I get it. So I hope you guys understood it and do try it out. Actually, बहुत छोटा सा कोड है. Initialize करो एक white की wheat whatever that is, and then try to run this whole thing. Try to run this API. Try to use this free API.com से you can take this. थोड़ा overwhelming दिखता क्योंकि देखो this is one API right. ऐसे है ना बहुत पड़े हुए हैं ये वेबसाइट पे. अरे oh my goodness wait I need to see हाँ देखो जैसे get user by ID है तो अब देखो क्या कर सकते हैं अपन instead of one user you can get the users ID based on this. अब इसको थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं अपन जैसे कि the moment I click on no more ठीक है what will happen is you will go to a separate page and then we will basically we will render this person's data. So next class में अपन routes देखेंगे ठीक है routing देखेंगे. अब अपन usually single page applications देखे React में but how do you make this route जैसे कि आप देखो T6 में यहाँ पर I don't think इसमें है या देखो never mind like जैसे कि ये वेबसाइट में हो गया ठीक है ये वेबसाइट में JSON beautifier बोल के माय गुडनेस आई एम नॉट फाइंडिंग अ प्रॉपर. अब देखो यहाँ पर रिएक्ट की वेबसाइट है देखो यहाँ पर ये राउट्स दिख रहे हैं ना आपको दूसरे से पेजेस है यहाँ पर ठीक है यहाँ पर अलग अलग पेजेस है एवरी पेज इज having a different route over here right. So in the next class we will look into how these routings happen and yeah thanks a lot for attending. This was it signing off Mohammed Samiuddin and yep if you have any doubts please stay back ठीक है ना. And if you want to talk about something cool otherwise you guys can leave ठीक है cool. Did I record my right screen? Oh shit was I recording my left screen? Oh my goodness shit man. Oh never mind it's fine just kidding. uh, अरे shit wrong screen record कर रहा था मैं. It's fine I think someone else also recorded ठीक ठीक guys see you guys I'll be leaving.